I will share my screen. All of you are able to see the screen. My screen is visible. Audio is clear. All Yes, of, sir. okay. Today we discuss about approaches in and models in education and micro teaching. So, what is approaches? Approaches means in education, for example, in research, uh, whatever type of data we want, like qualitative data or quantitative data. So based on the need of data, we will approach the whether the research is qualitative or quantitative. So approach in research depends on the data, based on the nature of the data. So like that, here in education, the approaches depends on the whether we are teaching the children's or adults or geriatrics group. So here the approaches and models depend on the age group or the learners, the age group of the whom we are teaching. Based on that, the approaches will differ. So basic approaches or models in this education are pedagogy and andragogy. So these are basic one. So pedagogy is the children's learning process. What is the pedagogy? The art and science of education or teaching in the children's. That is the pedagogy. What is the main characteristic of this pedagogy is the teacher is there. Teacher will teach us the students or childs. That is the pedagogy. So what is andragogy? Andragogy, the adult learning process. Here we are teaching. Our approach is entirely different. The model is entirely different because the learner here is adult. So that's why we call it as a andragogy. So the approach and model differs based on the whom we teaching, that is whether children's or adults. Based on that, two models are there, pedagogy model and andragogy model. So in both the models, the approach of teaching is differs because in pedagogy we are teaching the children's, in andragogy we are teaching the adults, because children's teaching process are different because child's learning characters are different, adult characters are different. That's why these are basic models in the education, pedagogy and andragogy. All of you understood what is the pedagogy and understood andragogy? Basic concept of pedagogy and andragogy. These are the basic models in the education. We are approaching the pedagogy and andragogy based on the whom we are teaching. In pedagogy, we are teaching the children learning process. In andragogy, the adult learning process. So in pedagogy, it is the method of teaching the children. What are the pedagogy versus andragogy? Now we are discussing what is the pedagogy. It is the method of teaching the children. Andragogy, it is the method of teaching adults. So andragogy में क्या है? This is the method for teaching adults. How we will teach the adults. So detail about pedagogy and andragogy we will study in the another syllabus point is there, detail one. Just as a model approach in the education, I am teaching here. The separate session will be there regarding this pedagogy and andragogy. Just as a link to this teaching aptitude session, I am covering this portion. Pedagogy is a method of teaching children. Andragogy is a method of teaching the adults. Here, pedagogy, learners are dependent. Children's, whom we are taking this pedagogy in children's are dependent. That is, learners are dependent on the teacher. But in andragogy, learners are independent because here learners are adults. They are not dependent on the teacher. We already learned that adult characteristic. Adult learners are able to collect the things from different source. So that's why learners here not depend on the teachers. That is, learners are independent. Learners are independent. So in pedagogy, learners have less or no experience to share, hence teaching becomes
didactic. So here children are not have any experience of sharing and teaching, so that's why the learning becomes didactic. So but only telling the knowledge, but here learners are experienced, hence teaching involves discussion, problem solving, etc. Here only dictating like type of teaching will happen. Here learners are already experienced, they have knowledge, some of the concept they know. Here the in teaching in the andragogy, it involves the discussion, problem solving, etc. But here in children's, it is only mainly teaching, not discussion, group discussion. That much in depth we will not go in the pedagogy, but here involves the discussion, problem solving, etc. in the andragogy, as the learners are experienced. Learners learn whatever the curriculum offers. Here the children will learn the whatever told in the curriculum. The curriculum में क्या क्या बताए वो सारे चीजें learners learn करता है. But here in andragogy the content has to be modified according to the learner's need. It may go beyond the curriculum, it may go beyond the syllabus, as the learner need in deeper knowledge. Even though that particular concept are not needed in according to syllabus, the content may modified according to the learner need, or it may go behind the curriculum or syllabus. Teachers are required to direct the learner. Here learners are depend on teacher are required. Without teacher the learner or student are not able to learn. So that's why teachers required to direct the learners. But in andragogy the learners are self motivated. Learners need teachers to guide them. In adults में क्या होता है, learners already self motivated, they are experienced, only teachers will guide them, not teach them. In the professional courses, as we teaching adults, so we guide them. But in school, the teachers are required to direct the learner. The child will not know what to do, so entirely depend on the teacher. But in adult andragogy, already the learners are self-motivated. Only teachers we will guide the learners. So learning is curriculum oriented pedagogy में entirely purely on curriculum में क्या बताए उतने में focus करता है. But andragogy learning is goal related, goal oriented. The adults are whatever they learn, they are goal oriented. For specific purpose they will learn. That is the one of the adult characteristic we learn. So that's why here goal oriented. They will keep particular goal. I have to clear the NET exam, I have to clear the PhD entrance exam. So like that particular goal they have kept in the mind. Not only the simply curriculum finishing is not only the idea in the andragogy, they give the particular goal oriented. So that's why learning is goal oriented in the andragogy. So this is the pedagogy versus andragogy. So what is the pedagogy model? Pedagogy is a conventional approach. In this method, the instructor more or less controls the material to be learned and the pace of learning while presenting the course content to the student. The purpose of this method of learning is to acquire and memorize the new knowledge or learn new skill. पेडागोगी में क्या होते हैं, इट इज ए कन्वेंशनल अप्रोच. इन स्कूल में हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज द पेडागोगी मॉडल. चिल्ड्रंस को हम क्या सिखा रहे हैं, दैट इज द पेडागोगी मॉडल. सो हियर क्या इन दिस मेथड क्या होता है, इंस्ट्रक्टर और टीचर कंट्रोल्स द मटेरियल. बच्चे क्या सिखाना है, द मटेरियल टू बी लर्नड एंड पेस ऑफ लर्निंग, हाउ द चाइल्ड विल लर्न, that controlled by the teacher. It depend on the teacher. In this method the instructor more or less controls the material to be learned and the pace of learning while presenting the course content to the students. Entirely teacher depend करता है बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है. So entirely decision will be taken by the instructor and teacher. The purpose of this method of learning is to acquire and memorize the new knowledge or learn new things. This method of pedagogy model का main purpose क्या है, learning is acquire and memorize the new knowledge or new concepts, new ideas को
memorize करने के लिए, समझाने के लिए, and the child will learn new skills. So learning the new skills also this pedagogy model will help. But here the teacher will decide whatever the material, whatever the pace of learning, everything will be decided by the teacher. It is the instructor who is the main important in the pedagogy model. So the pedagogy model is also called as instructor-centered teaching, uh, also described as a pedagogical approach. That means in pedagogical model, it is a teacher-centric or instructor-centered. Teacher-centric and learner-centric we already discussed. You easily understand. Pedagogical approach is a teacher-centered one because teacher is mainly focused here. Teacher will decide everything. So pedagogy is the art and science of teaching. It determines how to teaching occurs, the approach to teaching and learning, the way the content is delivered, what the students learn as a result of the process. In the pedagogical approach, the learner is dependent upon the instructor for all learning, and the teacher assumes full responsibility for what is taught and how it is learned. A teacher or instructor evaluates the learning process of the students. So this is the description about pedagogy. Almost all thing you know, the teaching and learning here in this approach entirely dependent upon the instructor for all the learning, and the teacher assumes, the teacher का think रहता है, teacher will assume that full responsibility for taught and how it is learned. Teaching and learning, students how they will learn entirely depend on the teacher, and teacher is the teacher who is evaluating the learning process of the student. Teacher only evaluates the learning process of the student in the pedagogy. That is the concept of pedagogy, or this is instructor center method or teacher center method. The whole and sole meaning of this pedagogy is the teacher is important, or based on teacher only the learning teaching will happen. The major portion will be a major work or major responsibilities on the teacher only. If child is not learn also, then the responsibility for that is the teacher only. In primary school, it literally happens. If child is not able to read, then the parents will ask to the teacher what he is teaching. So entirely wholly the learning of child depends on the teacher. That is he is the teacher. The teacher assumes full responsibility for what is taught and how it is learned. So उधर स्कूल लेवल में क्या होता है, बच्चे नहीं सीख रहे, इससे ज्यादा टीचर अच्छे से नहीं सिखा रहे, यही पॉइंट आता है. सो इन दी पेडागॉजी और इन दी pedagogic model, teacher assumes full responsibility for what is taught and how it is learned. That is the concept of pedagogy. So another thing, so pedagogy and androgogy, generally the pedagogy will covers the group of children to adolescents, up to the children to adolescent age group. The pedagogy will covers. After the adults, the androgogy model will covers the approach of the teaching. So pedagogy covers the children's up to the adolescent age group. So what are the changes or shifts from pedagogy and androgogy? What is the changes happens from the pedagogy to androgogy? That is, in pedagogy, teacher-centered fixed designs, but andragogy, learner-centers. Learner is this centered one. Learners centered. It is learner-centered and flexible process. Flexible means based on the concepts, depend on the class, depend on the need. The flexibility will happens in the teaching methods. But here, teacher-centered and fixed designs are there. Then from pedagogy, teachers direction and decision. Pedagogy में teachers will direct and take the decision, major decision. But here andragogy, learners autonomy. It depends on learners, whether learners are interested, not interested, whether he want to learn, not learn.
we know to extra things or not. Everything will be autonomy. We will live upon the students in the adults. It is his interest, his career based on that. But in school, it is everything is depend on teacher direction, and teacher will take the decisions. In from pedagogy, teacher guidance and monitoring of the learning. In andragogy, the teacher only facilitates, supports, and encourage for the learning in the andragogy, because here adults are matured, they have self experience, self motivated. That's why here more than teaching, the teacher will facilitate, support, and encourage for the learning. In pedagogy, passive reception in learning. Teacher will active, the students will receive the knowledge passively. That is the passive uh, reception in the learning. In andragogy, active participation in the learning. The learners will actively participate and learn the things. That is the andragogy. The learners are active in the andragogy, but learners are passive in the pedagogy, because here active persons are teachers pedagogy may. Here active persons are learners, adults. So from pedagogy, learning within the four walls of the classroom. In school may usually learning will happen in the four walls of the classroom. But in andragogy, learning will in the wider social context, classroom, outside classroom, in the different settings, different social context. The teaching may extend that learning in the wider social context. The knowledge given as fixed. Pedagogy में knowledge as given is fixed. कितना पढ़ाई करना है, that particular subject and that particular chapter is fixed. Knowledge as given and fixed. But in andragogy, knowledge as it evolves and created. एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का नोट्स कितना है, वी विल स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्राइमरी आल्सो, हाई स्कूल आल्सो, एंड इन हायर एजुकेशन आल्सो. बट what is the content, how much information given in the textbook, that is knowledge as given and that is fixed. But in andragogy, as we comes in this level, the knowledge evolves. No, we will not restrict only textbook or how much they have given. It will evolves and created. The knowledge evolves and create. But in pedagogy, the knowledge as a given and fixed. कितना बोला है book में उतना है knowledge. The teacher will teach and student will learn, and it is fixed. It is disciplinary focus, means in which disciplinary is there, that only they will think. But in andragogy, it may go multidisciplinary and educational focus. Multidisciplinary का स्टडी होता है एंड्रागोगी में, बट पेडागोगी में नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर. सो उनका क्या है डिसिप्लिन, उसमें ही फोकस करता है पेडागोगी में. बट एंड्रागोगी में वी कैन गो मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, एवरीथिंग. देन from pedagogy, linear exposure. Linear means one by one they will teach in the pedagogy. First chapter के बाद second chapter के third. So linear exposure from one to serial linear exposure. That is linear exposure. So one after the other. So based on previous learning only, the next chapter will they will proceed like that, linear exposure. But in adult, multiple and diverse exposure. In adult, today I will teach the research methodology. Next class directly I can go to the another topic. That is multiple and divergent exposure. There is a no linear, but because the adults are able to understand. So suddenly from anatomy to directly I can teach the another subject, or divergent exposure. But here linear exposure, the one by one dependent subject or teaches in the pedagogy. So the continuity should be there. That is the linear exposure. But in the andragogy, multiple and divergent exposure will happen. The pedagogy assessment is short, few, but in andragogy assessment is multifarious and continuous. So these are the pedagogy and andragogy में क्या क्या शिफ्ट होता है. फ्रॉम पेडागोजी टू एंड्रागोजी क्या क्या थिंग्स कैसे शिफ्ट होता है. दिस चार्ट विल शोइंग दी हाउ द थिंग्स विल चेंज फ्रॉम पेडागोजी टू एंड्रागोजी.
So next, andragogy model. In this model, the learner is mostly self-directed. So who are the learners here? Adults. Andragogy model. In this model, the learners is mostly self-directed and is responsible for his or her learning. Here, college level में, professional level में, once we enter, it is self-directed. Whether he has to attend class, whether he has to listen, learn, entirely, it is a depend on learner. It is his responsible or her own responsible for her own learning. So that is the andragogy model. The student learn best not only by receiving knowledge but also by interpreting. इधर क्या होता है, स्टूडेंट्स क्लास में क्या सुनता है, नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट ऑलो बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन द लर्निंग विल बी हैपेंस, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एट द सेम टाइम. बट इन चाइल्ड में ऐसा नहीं होता है, नॉलेज क्या लेता है उतना ही करता है. बट एंड्रोगोगी में द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज, by interpreting it and learning through some discovery or some new insights. Based on that, the learning will happen in the andragogy. At the same time, setting the pace of their own learning. Setting the pace of their own learning means how I can learn this concept. This will set by the learner itself. It is not set by the teacher. In the which method, how I can understand this concept, complex concept. So every adult or every adult learner, they will set their own pace of learning. I will teach it, I will learn it tomorrow, or I will learn it, this concept with that concept only. Whatever the thing, the pace of their own learning will be decided by the learners only. But in pedagogy, the teacher will decides the pace of the learning. So that is the difference. In this method, the instructors facilitates the learning of the participants and help them by offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge and develop new skills. कॉलेज प्रोफेशनल लेवल में क्या होते हैं, वी विल नॉट टीच एवरीथिंग, वी विल गिव सम बेसिक आइडियाज एंड नॉलेज. बेस्ड ऑन दैट वी विल motivate them or guide them, study the further readings, refer the other books, go in deeper. You should study yourself. Based on this classroom teaching or guidance, you are now able to understand the another subject, another concept, detailed concept. So in andragogy, what happens, the opportunity to learn themselves and acquire new knowledge and develop new skills. So इन एंड्रागोगी में यही होता है ना, क्लास में हमने आइडिया देता है, बेस्ड ऑन दैट द लर्नर्स विल गो इन डिटेल और दे विल लर्न और दे विल गेट न्यू नॉलेज बाय themselves, or they will get develop new skills by themselves. This type of teaching is also referred to as an andragogical approach. This type of whatever we are discussing, this one is called as andragogical approach. The self-evaluation is also characteristic of this approach. Andragogical approach is also identified with adult learning. So self-evaluation matlab whether I am understanding, whether I am correct, whether I am wrong, I am doing wrong, whether I am studying or not studying, whether so everything the adult is able to evaluate himself or herself for his characteristic. So that is the सेल्फ एवेल्युएशन इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अप्रोच. बट चाइल्ड को पता नहीं चलता है मुझे करेक्ट समझा गया, गलत समझा रहा हूँ, ये चाइल्ड को असेस करने को नहीं होता है, एवेल्युएट करने को नहीं होता है खुद का खुद. द टीचर विल एवेल्युएट इन द पेडागोगी. बट इन एंड्रागोगी सेल्फ एवेल्युएशन, द learner can also self evaluate his learning. This characteristic is also andragogical approach. In this model में ये approach भी होता है and identified with adult learning. This is called as adult learning. Adult learning में क्या होता है, self evaluation. Thus the model we called as adult learning के लिए andragogy model. So this is the adult learning. अडल्ट लर्निंग भी कहते हैं, मतलब अडल्ट लर्निंग में क्या होता है, ओनली टीचर विल गाइड्स और he will motivate, instructor will motivate to get further knowledge, new skills to the learners, and the learner is able to self evaluate. That is the adult learning. That is the androgogy model. So all of you understood what is pedagogy and andragogy? It is clear?
All of you? Hello? Yes, sir. Okay. Next, teaching. As we studied about teaching, so now teaching phases and stages of the teaching. Teaching is a complex task. हमने टीचिंग कर रहे एक्चुअली दिस इज ए नॉट ए सिंगल स्टेज और सिंगल वर्क. It is a we will do this teaching in the different phases and stages. So what are the phases and stages of the teaching? Now we will discuss. Teaching is a complex task. For performing this task, systematic planning is needed. Even though in effective teaching also we know learn that the effective planning is needed for the effective teaching. So टीचिंग परफॉर्म करने के लिए हमको प्लानिंग जरूरत है. विदाउट प्लानिंग द टीचिंग विल नॉट effective. That is the concept of this. Teaching is to be considered in terms of various steps, and the different steps constituting the process are called the phases of the teaching. The teaching activities can be classified into 3 phases of the teaching. हमने क्या टीचिंग करता है, ये डिफरेंट स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द टीचिंग प्रोसेस. वी कैन डिवाइड दिस टीचिंग प्रोसेस और स्टेप्स इनटू 3 phases. The phases of teaching we call as pre-active phase, then interactive phase, then post-active phase. टीचिंग का स्टेप्स को हमने 3 phases में डिवाइड किया है. प्री-एक्टिव फेज, interactive phase and post-active phase. Pre-active phase is planning stage, interactive phase is implementation stage, then post-active stage is evaluation stage. We will discuss one by one. What is pre-active stage? Before actual classroom teaching, a teacher has to perform many tasks. This task includes the preparing a lesson plans, arranging the furniture or equipment within the classroom, manning papers, studying test reports, reading the sections of a textbook, and thinking about the aberrant behavior of a particular student. These activities are very crucial to teachers perform it during regular teaching sessions. Pre-active is more or less deliberative. What is the pre-active stage? हमने क्लास को जाने से पहले ही सम स्टेप्स और सम फेज होता है. उस पे क्या होता है, what are the tasks I will do in the क्लासरूम में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे प्लान करते हैं ना. दैट इज द प्री एक्टिव स्टेज. दिस टास्क इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान कैसे करना है, वो भी प्री एक्टिव स्टेज में आता है. बिफोर गोइंग द क्लासरूम वी विल प्लान फॉर द लेसन. टुडे क्या लेसन लेना है, उस पे कैसे करना है. सो एंड arranging furniture and equipment, whether the benches are there or other ready for the classroom taking, whether everything is there. So this type of task, or whether the classroom is projector is working, whether the sound system is working. So preparation of the class, before the preparation of class, then studying the test reports, any test, if you taken the test reports, study how we will distribute, reading section of the textbook and thinking about the aberrant any particular student is violent in that particular class. So we will also think for that matter also, how we will tackle that student, that particular student. So before going to the classroom, we will plan for certain things. That is the pre-active stage. और कोई कोई क्लासरूम में रहता है, दिस थर्ड ईयर क्लास का बच्चा है ना, बहुत डिस्टर्ब करता है क्लास में. सो बिफोर गोइंग टू दैट थर्ड ईयर क्लासरूम आई विल प्रिपेयर समथिंग. ये लड़का ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ये बेंच वाले ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ये लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये सामने बेंचेस छोड़ के पीछे जाके बैठते. सो सर्टन थिंग्स विल बी देयर बिफोर गोइंग टू दैट क्लासरूम. सो वी विल प्रिपेयर प्लान for that actually taking the classroom teaching. That one we called as a pre-active stage or first phase. This is the planning stage. Pre-active phase is planning phase. Actually in practically also it will happen. Before going the classroom, we will do some planning regarding lessons, regarding the classroom furnitures, facilities, and regarding the particular students of their behavior. Everything we will plan. That is the pre-active stage.
So this is important because without pre-active stage or planning, if you go to the classroom, it will not become effective teaching. If suddenly is the students behaving or projector is not working, the facilities are not available, it may problem. It may create problems or disturbances. That's why in pre-planning only we will think about these things. Then we will move on for the interactive stage, or we will go to the class. So this is the pre-active stage. Then the teacher at this stage hypothesis about the possible outcomes of his action. Hypothesis means the probable outcome. Probable outcome. Hypothesis का मतलब क्या है? Probable outcome. After the my class, इस class ऐसे होता है, ऐसे इसका A class का outcomes आने वाला है. So he in this stage he may hypothesis about the possible outcomes of his action, and the teacher decides what textbook to use or how to group the children for reading, or whether to notify students parents of their poor performance. Their behavior is at least analyzable. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए आप चिल्ड्रंस का एजुकेशन का माइंड में रख के पढ़ाई करना है दिस पॉइंट्स को. विच टेक्स्ट बुक आई विल यूज, वेदर चिल्ड्रंस के परफॉर्मेंस के बारे में हमको उनको रिपोर्ट करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे यूजुअली स्कूल लेवल में भी ये प्लानिंग होता है. टीचर्स यूजुअली चाइल्ड स्कूल एजुकेशन में होता है. टीचर्स विल प्लान फॉर द whether notify students parents of their poor performance, their behavior. These things will happen in at the school level also. In college levels also some management will use this policy. अगर बच्चों को कम मार्क्स आ रहा है, so college will arrange or do these things. But in school level usually teacher will do these things, plan for before going to the classroom. These are the pre-active stage. So what are the things pre-active stage includes? As a summary, forming or a fixing of goals. What are the goals or objectives for that class? That is the forming or fixing of goals. Taking the decision about the content, which content, how much content should be delivered. The taking decision about the content, managing or sequencing the appropriate means and ways of the present. How I can present, what are the sequential manners, step by step. Everything will be done in the pre-active stage only. Deciding about appropriate strategies and tactics of teaching. So which are the strategies I can use, which methods, tactics I can use before going to the classroom, they will do in the pre-active stage only. Developing teaching strategy for the specific subject matter. For that particular subject, इंडिविजुअल और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए. हाउ फॉर एग्जांपल साइंस क्लास है, आज साइंस क्लास में अगर कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैंने कैसे टीच करूँ आज को मास का बारे में, फोर्स का बारे में. सो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर. दिस विल usually done in the pre-active stage. So these are the points which includes the pre-active stage प्री-एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग. सो गोल्स सेटअप करता है, डिसीजन लेते हैं कंटेंट के बारे में, सीक्वेंस हमको सीक्वेंस वी विल प्लान, एंड स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग एंड for specific subject matter. So these things comes under the pre-active stage in pre-active stage of the teaching. So all of you understood what is pre-active. Pre-active stage is a planning stage. Now interactive phase. Now the teacher will enter the classroom. Before entering the classroom, he do the pre-active phase or planning stage. Next, he will enter in the interactive phase, that is in classroom. This is actual classroom teaching. At this stage, a teacher uses a number of strategy for achieving the goals already set. In pre stage, mein already he has set the goals. So now he will use the number of strategy for achieving that goals already set. In the interactive setting, the behavior of the teacher is more or less spontaneous. इस पे क्या होता है, अब अगर आप कितना भी प्लान करो, बेस्ड ऑन द क्लास एनवायरनमेंट दैट मोमेंट, द टीचर का बिहेवियर मोर और लेस स्पॉन्टेनियस. सो दैट टाइम the certain things will come out, the certain points will come out, so certain strategy will come out in the
the classroom. So classroom में spontaneously some of the behavior and some of the concept will come spontaneously. See, research suggests that things happen quickly during the teaching session. हमने प्लान करके गए तो भी certain things will certain things will happen in the spontaneously. Suddenly कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा और दूसरा कुछ पॉइंट का बारे में निकाला. So the discussion may change the things spontaneously. So that is the interactive stage. Amid the various activities, the teacher often little time to think. In a classroom, the teacher has to have little time to think. Suddenly, some student ask any specific question relating to that. So they have to answer. We don't have more time to think and tell the students because the class is going on. So the teacher has less time for different activities or different things. Suddenly the student may ask, sir, in this condition what we do. So for thinking that answer, we don't have enough time. So that's why the pre-planning stage is important. Our content, our the knowledge, deeper knowledge is needed because some things will spontaneously happens in the interactive stage. It includes all those behaviors and activities which teacher uses after entering the classroom. इसमें क्या रहता है इंटरैक्टिव स्टेजेस में, once the teacher enters the classroom, the behavior activities whatever teacher is uses, that one interactive stage covers all these things. The teacher provides pupils verbal stimulation for various kinds. Verbal stimulation का मतलब क्या है? Verbally we will stimulate the student for some of the. अगर बच्चों को interactive नहीं है, then we will ask the questions or we will stimulate verbally. Verbally means by speaking, by asking, by motivating, we will stimulate the pupils, students. So to understand this stage, I will give one example. For example, in surgery, for appendicectomy. So before going to the actual surgery, what are the 3 phases in the surgery? Can anyone tell? हमने एक अपेंडिसाइटिस पेशेंट को डायग्नोस किया. अगर अपेंडिसेक्टोमी करना है हमको, तुरंत उनको अपेंडिसेक्टोमी करते हैं या we will divide that procedure in the parts? Hello? Pre-operative, operative, and post-operative. So pre-operative, operative, and post-operative in the same manner only. This you can understand. So in pre-operative में क्या करते हैं, हमने पूरा पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, उसका ऑपरेटिंग स्टेज में क्या करना है, अपेंडिसेक्टोमी निकालना है, इनका कितना दिन से, ये हमने प्लान करते हैं एक्चुअल प्रोसीजर को. While doing operative stage, while we open the abdomen with appendicitis, some other problems we may see this simultaneously. Sometimes क्या होता है, appendicitis के लिए हमने abdomen open करते, वो कभी कभी डाइवर्टिकुलस भी निकालते, कभी कभी अगर फीमेल पेशेंट है तो कुछ पॉलीसिस्ट भी रहते, कभी कभी यूट्रन ट्यूबर भी रहते. राइट साइड में अगर ओवरियन में ट्यूमर भी होता तो वो भी अपेंडिसाइटिस जैसे ही लगता. कभी कभी रिपोर्टिंग में with appendicitis, but they are not reported in the USG tumor bhi hai or some mass bhi hai. When we open the abdomen for appendicitis, then we also see the tumor or some mass. So that is spontaneously. There is no time for surgeon to take decision. Sufficient time nahi rehte udhar. So the surgeon should take decision immediately because the patient is taken for the appendicectomy. So immediately the surgeon will send the message to the attendants. The one mass is also there. We should remove that mass also. That's why then only the complete relief will happen. So taking decision, the time will be enough time will be there. Like that only in the taking classroom only in sudden questions, sudden problems or sudden activities the student asks, we don't have any sufficient time. That is the same concept you can understand with that example. And post-operative, after the post-operative, we will evaluate the patient's pain, recovery,
So like that here only also in teaching also post active phase में क्या करते हैं हम evaluate करते हैं बच्चे के learning कैसे हुआ वो evaluate करते थे. In the same thing so, here also it will fit the example. Same pre-operative operative post operative में क्या concept है वही in teaching phase में भी suit होता है for the understanding purpose. Even some another example we may take in drama. Now actually ड्रामा हमने स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए प्लान करता है कौन सा पोजीशन में खड़े रहना है कौन किसका डायलॉग के बाद किसको डायलॉग कौन डायलॉग नहीं ये सारे प्री प्लानिंग में होता है. एक्चुअली परफॉर्मिंग ड्रामा some things will happen spontaneously. अगर हम रियली ड्रामा करते टाइम क्या होता है कभी कभी डायलॉग हम प्लान तो क्या रहते हैं सर्टन थिंग्स विल हैपन इन दी ऑन स्टेज ओनली. कुछ डायलॉग हम एक्स्ट्रा बोलते हैं और कुछ डायलॉग ये करते हैं मैचअप करते हैं तो उधर टाइम नहीं रहते हमको सोचने के लिए बिकॉज द शो विल बी रन. सो हम कुछ तो मैचअप कर लेते हैं उधर. सो दैट इज द इंटरेक्टिव और actual working phase. After the drama we will take the evaluation or how was our performance, how was our dialogue delivery. So audience से हम क्या करते हैं उसका feedback और evaluation लेते हैं. So same manner the teaching also pre-active phase, interactive phase, the post-active phase will be there. So coming to same one, the interactive phase is amid various activities, teacher often has little time to think. It includes all the behaviors and activities which teacher uses after the entering the classroom. The in interactive stages में क्या होता है? It involves the following: perceiving the size of class by teacher to identify the student. कितना लोग है, कैसे classroom, whether 50 student, 100 students, the size मतलब हमने देखते हैं ना स्टेज में जाने के बाद ऑडियंस कितना है. हमने थिएटर में अगर कुछ ड्रामा प्ले कर रहे हैं माई सेल्फ सो आई विल सी द ऑडियंस ज्यादा है तो हमको थोड़ा डर आता है. सो ऑडियंस कम है तो थोड़ा कम है. सो साइज ऑफ द ऑडियंस और साइज ऑफ द क्लासरूम इज आल्सो effect. That is the perceiving the हमने interactive stage में क्या करते हैं क्लासरूम को देखते कितना बच्चे हैं. So perceiving the size of class by the teacher to identify the students and diagnosing the achievements of learners and action initiation and response शुरू करते हैं हमने. Diagnosing the achievements of the learners मतलब learners का क्या बोलते हैं हम learners का हम diagnose करते हैं कौन सा लेवल का स्टूडेंट्स है कैसे एक डायग्नोस करते क्लासरूम देखते देखते हमको एक आइडिया आता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस डायग्नोसिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द लर्नर्स एंड वी विल टेक द एक्शन एंड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट. क्लासरूम लेके हमको थोड़ा वाइज बढ़ाना है क्या करना है बच्चे कैसे बिहेव करता है क्लास में वो सब देख के हमको एक इनिशिएशन वी विल कम टू द एक्शन दैट इज द रेस्पॉन्स. एक्शन एंड रेस्पॉन्स को शुरू करते हैं. Then this interactive stage में क्या क्या follow होते हैं. We will select the selection of the stimuli. Stimuli is हमने stimuli and response के बारे में already previous class में पढ़ाई किया. Actually हमने कैसे करते हैं interactive stage में एक stimulus को उठाते हैं. What is the stimulus here? The stimulus here is the subject matter or concept itself is a stimulus. ये ऐसे कॉन्सेप्ट बेस में दिया है. एक्चुअली द सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलाई का मतलब क्या है हमने एक सब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट उठाया दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द फीमर. सो दैट इज द स्टिमुलाई फॉर स्टूडेंट. सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई को उठाया. हम हमारा मेडिकल साइंस का एग्जांपल लिया तो हमने फीमर लिया. अगर दूसरा सब्जेक्ट है तो दे विल टेक एज ए the poetries of Kalidasa. That is the stimuli for the student. Stimuli may be person, matter, subject, experience, failure, success, whatever may be the stimulus in the broader sense. But here in interactive stage में हम क्या करते हैं selection of stimulus. Stimulus का मतलब है selection of subject or concept. First we will take the select the stimulus. So बच्चे को stimulus देते हो. Today I will study about the anatomy of the femur. So selection of stimuli. Stimuli you have to understand here selection of stimuli means the particular content or subject. Then the presentation of stimuli. Presentation of stimuli matlab whatever subject we take we will present that subject, the external features of the bone, the margins, nerve supplying, everything we will present the
presentation of the stimuli, that is the presentation of that concept or subject. Then feedback of reinforcement. What we will do, the फीडबैक लेते हैं हमने, कैसे आपको समझ में आ रहे नहीं आ रहे, क्या क्या समझ में नहीं आ रहे, क्या समझ में आ रहे, एक फीडबैक लेते हैं। उसके बाद फिर से क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग। अगर बच्चों को कुछ समझ में आ रहे सो विल डेवलप दी अदर स्ट्रेटजी। अगर नहीं समझ में आ रहे सो तो बच्चे को समझ में आने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं। अगर एनाटॉमी ऑफ दिस फीमर को अगर किसी किसी को समझ में नहीं आ रहे, सो देन वी विल डेवलप different strategy for teaching the that stimuli or subject. This will, the interactive stage will happens in the this paradigm. This is the general one: stimuli, presentation of stimuli, feedback of reinforcement, then development of strategies of the teaching. The meaning of this is nothing but subject को present करना है, feedback लेना है, then we will develop the strategies for the teaching. You have to understood like this, because these things are for all type of education, art, science, engineering, everything. These are the basic concept of education or teaching methods, not only for medical sense. So that's why they have given broader sense. We have to apply to our science. So selection of stimuli means the subject. In drama classes, agar singing classes, the stimuli will be different. So particular song will be stimuli for them. Then they will present that song or stimuli. Then they will take the feedback. What is the, based on their knowledge, the singing knowledge, raga ये है, ताला नहीं है, वो सारे feedback देके फिर से development strategy for the teaching. So this is the broader method while using the interactive stage of the teaching. So this is the concept. All of you understood? Hello? Yes, sir. Then post-active stage. This phase is also known as the evaluative stage. It provides the necessary feedback to the teacher and the student in bringing the desired improvement in their performance. It is related to both teaching and learning. The teacher analyzes to what extent the students have grasped the material represent to them. Once again, अगर हमने पोस्ट ऑपरेटिव के बाद पेशेंट का अगर हाइड्रोसिल और हर्निया का ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट से फीडबैक लिया, सो अगर पेशेंट ने बोला एकदम बिल्कुल ठीक है, सो आई कैन एनालाइज माय सर्जिकल स्किल्स, हाँ मैंने ठीक करा है। अगर पेशेंट बोल रहे कुछ प्रिकिंग हो रहे, थोड़ा इरिटेशन है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, आई कैन माई सेल्फ आई कैन इम्प्रूव. सो लाइक दैट इन टीचिंग आल्सो, अगर इट इज रिलेटेड टू बोथ टीचर एंड लर्नर. इधर क्या होता है, टीचर कैन एनालाइज व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट्स हैव ग्रास्प्ड. मैंने कितना कंटेंट बोला था उतना पूरा समझ में आ गया नहीं आया बच्चों को, वो हमको पता चलता है दिस एवेल्युएटिव स्टेज में और पोस्ट एक्टिव स्टेज में. बेस्ड ऑन दैट वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस. अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहे, दे बच्चे आर गिवन सर यू आर टेलिंग टू मच फास्ट और एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग्स को बता रहे, मतलब वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ बाय दिस फीडबैक और this taken from the students. That is the proactive stage. Then the teacher is able to see whether the methods strategies are used by him were successful, if so what extent. मैंने ये स्ट्रेटजी मेथड्स को यूज किया था क्लास टीच करने के लिए, ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो भी कितना लेवल तक हुआ है, नहीं हुआ है, ये पता चलता है हमको पोस्ट एवेल्युएशन में. इट हेल्प्स द टीचर टू टीच थिंग्स बेटर इन फ्यूचर. ठीक है, ये क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहे तो बच्चे को ये मेथोडोलॉजी से समझ में नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या चेंज करना है, तो टीचर को हेल्प करता है. इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू लर्न थिंग्स बेटर. सो वंस अगेन द फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होते हैं, सर इतना तो समझ में आ रहे, हमको और थोड़ा ये भी चाहिए बोल के बच्चे फीडबैक दिए तो द टीचर विल टीच अस. Then the learning things is also help the students by giving the feedback. When the learner give the feedback only, then the teacher will improve. Then based on this feedback response only, the teacher will brings the more good ideas or good methods in the future. Then it is also helps to the learners
थिंग्स बेटर, स्टूडेंट्स को भी लर्न करने के लिए बेटर होता है। अगर आप बच्चे लोग टीचर को नहीं बोल रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं रहा, देन हाउ टीचर शुड कम टू नो दिस इज द प्रॉब्लम विथ मी। सो अगर बच्चे नहीं बोल रहे, सो टीचर विल टीच इस सेम मैनर, सो द इट इज लॉस्ट फॉर द चिल्ड्रंस। कभी कभी होता है ना क्लास में पीछे वाले को हमारा आवाज नहीं जाते, सो बच्चे ऐसे ही बैठते, बाद में क्लास के बाद सर हमको क्लास में सुना ही नहीं देते, लास्ट का बोले तो आई विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज आई विल same continue, so it will last for the students. So feedback is also helps the student to learn things better. So it helps the teacher to decide whether he should proceed with new contents or reteach what has already been taught. फीडबैक से मैंने क्या कंटेंट, क्या नोट्स बनाया, क्या पीपीटी बनाया, क्या मेथड्स कंटेंट यूज किया, इट इज एनफ और आई कैन रीटीच विथ ऑलरेडी बीन टॉट। सो फीडबैक से हमको पता चलता है। फॉलोइंग आर द मेन ऑपरेशन एट दिस स्टेज में क्या क्या होता है, द मेन पॉइंट्स एज ए समरी। असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड, असेस करते हैं हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखा था प्री टीचिंग में, ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स को असेसमेंट करते हैं पोस्ट टू एवेल्युएट में हम। then decision regarding reteaching the content for further taking of the content, decision कर सकते हैं हमने after the feedback whether this content is can be reteach or modify or further taking of this content of the decision will be happen by this post operative or feedback mechanism. Assessing the suitability of the instrumental materials and कौन सा materials teaching aids लेके हमने use teach किया था, whether these are useful or not useful, you can assess that material and aids also this teaching are by taking the feedback from the students. मैंने एक particular aid use करके aids use करके teach किया होता, अगर better feedback है तो I can assess this teaching aids are good, अगर उससे फायदा नहीं मिले तो I can assess that this teaching aids are not useful for this particular chapter or concept. I can assess the instructional material and aids, teaching aids. Assessing the impact of the classroom environment. So feedback से हमको classroom environment कैसे चल रहे, सर आपका क्लास में बहुत आवाज करते बच्चे, आप कंट्रोल नहीं करते. So these type of feedback also comes. So then we will strict enough to maintain the classroom enough environment silent, or everyone can listen the lecture. So that is the assessing the impact of the classroom environment also we will can done in this the post teaching evaluation method. So this is the chart what we have discussed in the one page, teaching, the teaching phases, pre-active stage, interactive stage, post-active stage. Stage 1, fixing up goals, contents, decision about the strategies. Stage 2 में interactive stage में क्या करते हैं, diagnosis of the learners, actions and reactions. Stage 3 में post-active stage, appropriate testing device and feedback and testing. This is the tabular presentation of what we studied, the 3 stages of the teaching. So based on this, we can solve this question. So the question is, which of the following activities will be considered most relevant for pre-active stage of the teaching? First one, writing of instructional objectives. Second one, presentation of content in relation to objectives. Third one, preparing a guideline for improvement in the teaching. Fourth one, preparation of a lesson plan. All of you should participate, think and give the answer. Based on our discussion, this question will you can able to answer. Which of the following activities will be considered as the most relevant for the pre-active stage? हमने pre-active stage में कौन सा ये below activities relevant हो सकता है? That is the question. For pre-active stage of teaching के लिए कौन सा activity relevant हो सकता है? So option 1, 2, 3, 4. So writing of instructional objectives, whether it is pre-active stage में आता है, active stage में आता है, post-active में stage में आता है. Writing of instructional objectives, क्या क्या objectives हमने
लिख रहे हैं ना क्लास में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमको फुलफिल करने हैं, हमने ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर रहे हैं, वो कौन सा स्टेज में आता है? प्री एक्टिव, एक्टिव और पोस्ट एक्टिव में? हेलो, फिक्सिंग और सेटअप ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स कौन सा स्टेज में आता है? फॉर्मिंग ऑफ फिक्सिंग गोल्स, समझ में आ रहे नहीं आ रहे आपको? Pre-active. हाँ, हमने ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं पहले क्लास जाने से पहले, दैट कम्स अंडर द प्री एक्टिव स्टेज। Pre-active stage. राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये प्री एक्टिव स्टेज में करते हैं हम। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स, ये कौन सा स्टेज में आता है? इधर क्या कर रहे हैं हम? प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हमने प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा स्टेज में आता है? Interact. हाँ, सो इंटरेक्टिव स्टेज में आता है। देन प्रिपेयरिंग ए गाइडलाइन फॉर इम्प्रूवमेंट इन द टीचिंग, हमने इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग करने के लिए हमको एक गाइडलाइन बना रहे हैं मैं प्रिपेयरिंग, सो ये कौन सा स्टेज में आता है? Pre-active. Pre-teaching. पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या होता है? वो बच्चे ने फीडबैक दिया, मैंने एक गाइडलाइंस बना रहे हैं, प्रिपेयरिंग ए गाइडलाइन फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, मेरा टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैंने गाइडलाइंस बना रहे हैं, दिस कम्स अंडर पोस्ट एक्टिव स्टेज में आता है। प्रेजेंटेशन इन द कंटेंट इन द रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, मैंने क्या ऑब्जेक्ट रखा था उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इट इज द इंटरएक्टिव स्टेज। राइटिंग ए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इधर जाने से पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, फिक्सिंग गोल्स कर रहे, दैट इज द प्री एक्टिव स्टेज। देन फोर्थ वन, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, कौन सा स्टेज में करते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। सो चार ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन प्री एक्टिव स्टेज को सुटेबल होता है, कौन सा एक्टिविटीज प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग को सुटेबल होता है इस पे? 1 and 4. 1 and 4, these are the pre active stage of teaching, relevant होते हैं। So correct option is B. second one, 1 and 4 are following activities will be considered most relevant for the pre active stage of the teaching। So हमने objective लिखता है, then the preparation of lesson plan, these activities are more relevant in the pre active stage of the teaching। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव्स इज द इंटरैक्टिव स्टेज में करते हैं। प्रिपेयरिंग गाइडलाइंस फॉर इंप्रूविंग द टीचिंग इज पोस्ट टीचिंग में हम करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अप टू हियर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. Can you mute some? Hello, if you have question you can chat. Okay. Next we will move on the another concept, micro teaching. So what is micro teaching? Anyone know about micro teaching? Anyone have idea about micro teaching? Yes, sir. In PG, we will do micro teaching. Yes, yes. The small topic will given within 10 minutes. Sir. Okay. So you basically all of you have some idea about the micro teaching. So it is good if you have idea, you will understand this concept easily. So what is the micro teaching means? The micro teaching basically deals with the skills of teaching. इसमें क्या होता है micro teaching में? स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फोकस देता है, दैट इज द माइक्रो टीचिंग। इस पे डिफरेंट स्किल्स लाइक इंट्रोडक्शन स्किल, how will you introduce give the introduction in the class, that is the introduction skill. Then skill of stimulus variation,
स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड में आप कैसे लिखता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्किल. देन स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, तो क्लास को कैसे एंड करता है. स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं. स्किल ऑफ प्रोबिंग द क्वेश्चंस, प्रोबिंग करना क्या है, क्वेश्चंस. प्रोबिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. बाहर कैसे लगाओ आप. वन मिनट. Sorry for the disturbance, as it is Holi today, so some of the functions going in our apartments. Whether any disturbance is there, any music disturbance with my audio? Hello? No, sir. No, No. sir. Okay. No, sir. Oh, what is micro teaching? So the skills of teaching को हमने teach करना है, सिखाना है. So micro teaching will usually happens in the learners here are the upcoming teachers. आगे टीचर होने वाला स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स टीचर, वी कैन कॉल हिम एज ए स्टूडेंट टीचर. अगर आप पीजी कर रहे हैं, पीजी में आपको स्टूडेंट्स टीचर है, तो स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स आल्सो यू आर अपकमिंग teacher also. So that type of people, this micro teaching is useful. This type of micro teaching will be conducted in the student teachers. So usually in बीएड में क्या करते हैं, बीएड का स्टूडेंट्स टीचर्स कहते हैं हम लोग. दे बिकम टीचर्स आफ्टर द कंप्लीटिंग द बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में. They will focus on the different teaching methods, education training for the teaching. So that is the micro teaching. So क्या है micro teaching? Significance, meaning and definition of micro teaching. Micro teaching micro teaching is a significant effort to make a teacher education, that is teacher को education देना है, program, teacher education program, more effective and meaningful than the traditional program by making it more scientific. Recent researches in advanced countries in the area of classroom teaching have proved, according to the requirements, to develop teaching skills and competencies in the student teachers. Students teacher means here not it is a student and teachers, it is a student teachers. The students here are the upcoming teachers. That is the concept of student teachers. They are trainee teachers. You can take it as a trainee teachers. And even in service teachers, it is a controlled practice that makes it possible to concentrate on various aspects of teaching behavior in the student teacher training program. Okay, this is for टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम है. इस पे क्या है, स्टूडेंट टीचर को ट्रेन करने के लिए, टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए, कॉम्पिटेंसी लाने के लिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल कहते हैं. सो क्लासरूम टीचिंग इन द एडवांस कंट्रीज में क्या है, ये एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट माइक्रो टीचिंग कम्स फ्रॉम द यूएस. इट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ द यूएस. देयर this micro teaching comes the idea because of to develop teaching skills and competencies in the student teachers and even in service teacher. कभी कभी
टीचर्स को भी क्या है कॉम्पिटेंसी स्किल लाने के लिए भी माइक्रो टीचिंग का प्रयोग यूज करता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग. It is a controlled practice that makes it possible to concentrate on various aspects of teaching behavior in the student teacher training. Controlled practice मतलब क्या रहता है माइक्रो टीचिंग में? एक कंट्रोल एनवायरनमेंट रहता है, नॉर्मल क्लासरूम में नहीं करते हैं. That is a control practice that makes it possible to concentrate on various aspects of teaching behavior in the student teacher training program. Student teacher मतलब once again I am removing the trainee teacher are the pre teacher course that students are called as student teacher. His students also, that is meanwhile he will become teacher also. That is the for example internee doctors, he will next after the internship he will become doctor also, but he is not doctor this time, so he is a internee. So like that to student teacher training program, इंटरनी प्रोग्राम बोलते हैं ना. सो लाइक दैट स्टूडेंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमने माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं. देन माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट एम्स एट सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टीचिंग प्रोसेस. इसका मेन क्या है, एम क्या है माइक्रो टीचिंग के लिए? टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अगर माइक्रो टीचिंग में क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं. Allen DW, the founder of this or the discoverer of this method micro teaching का scientist है Allen. According to Allen क्या है, micro teaching is a scale down teaching encounter in class size and class time. Scale down मतलब क्या है? Actually हमने scale down करें, इसका मतलब क्या है? If class is more, then we will scale down. स्केल डाउन मतलब क्या है? आई विल शो. स्केल डाउन का मतलब क्या है? अगर दिस इज क्लासरूम बिग क्लासरूम, स्केल डाउन मतलब इसका स्मॉल वर्जन. This is a big scale. In big scale, real classroom will taken in the big scale. So we are scaling it down. That is the scale down. Scale down will happens in the this micro teaching. That is the scale down teaching encounters in class size, class time also. That is अगर हमने इधर 40 minutes time ले रहे टीचिंग के लिए, so it is scale down. in micro teaching में 5 to 10 minutes time देते हैं हम. So scale down of size and scale down of time is will happens in the this micro teaching. That is the it is a scale down teaching encounter in class size and class time. Then chief objectives of micro teaching, these are as under. So chief objectives of micro teaching का objectives क्या है? To enable the teacher trainees to learn and assimilate new teaching skills under the control condition. ट्रेनीज को न्यू टीचिंग स्किल्स को एंड असिमुलेट करने के लिए कंट्रोल कंडीशन रहते. कंट्रोल कंडीशन मींस दैट पर्टिकुलर कंडीशन नॉट रेगुलर क्लास में हम नहीं करते हैं माइक्रो टीचिंग, ये कंट्रोल कंडीशन रहते. सो इन दैट कंडीशंस द माइक्रो टीचिंग विल done to learn and assimilate the new teaching skills to trainee teachers. Then to enable the teacher trainers to gain confidence in teaching by mastering a number of teaching skill on a small group of students. Either small group of students or peers, what we call, उनका सामने trainee teacher को teach करने के लिए बोलता है. So because of this, the confidence of teaching may develop in that trainee teachers. That is the idea of this micro teaching. Then to make use of academic potential of teacher trainees for providing much needed feedback. To make use of the
academic potential of teacher trainees for providing a much needed feedback. इसका मीनिंग यही होता है. So टीचर ट्रेनिंग्स को फीडबैक देने के लिए सो इट इज हेल्पफुल. माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, सुपरवाइजर आपका पीयर साथ में बैठा हो रहते हैं. बेस्ड ऑन योर टीचिंग दे विल गिव द feedback, whatever feedback needed for your improvement to develop your skills, the providing much needed feedback. आपको क्या feedback, क्या need है आपका टीचिंग का मेथड में या स्किल में चेंज होना चाहिए, वो आपको फीडबैक मिलता है. विच फीडबैक यू नीडेड फॉर योर इम्प्रूवमेंट, दैट विल बी अवेलेबल फॉर you in this micro teaching to derive the maximum advantage with available material, money and the time. Whatever resources are available, in that only you are taking the benefit to overcome this teaching complexities. That is the objectives. And micro teaching का main क्या होता है, scaling down. Scaling down already I have shown you. Scaling down is a key word in micro teaching. In micro teaching procedure, the trainee is engaged in a scale down teaching situation. Scale down means it's the same thing only. Bigger classes, smaller class रहते हैं, higher time से small time will be given. More time से small time will be given. That is the scale down teaching situation. It is scaled down in terms of class size. Since the trainee is in the teaching a small group, 4 to 6 pupils, the lesson is scaled down into length of class time. आपको 30-40 minutes नहीं देते micro teaching में, 5 to 10 minutes generally. It is reduced to 5 to 10 minutes. It is also scaled down in terms of teaching task. Not only in the size and time, it is also scaled down in terms of teaching task. इस पे ज्यादा task नहीं देते आपको. For example, इतना सारे टीचिंग स्किल्स है, आपको एक माइक्रो टीचिंग क्लास में सारा स्किल्स के लिए टीच करने दिखाने के लिए नहीं बोलते. आपको एक एक स्किल के लिए आपको टाइम देते हैं. वो दे आर स्केलिंग डाउन these skills also. Not all skills you have to demonstrate in the single micro teaching class. Thus even the more 5 to 6 skills, only one skill you have to produce in front of the in the micro teaching class. That is the scaling down, class time reduced. That is, it is also scaled down in terms of teaching task. Task भी आपको ज्यादा नहीं देते, simple task, single task देता है. So you can teach the micro teaching. These tasks may include the participating and mastering of the specific teaching skills such as lecturing. आज अपने lecturing का skill का बारे में ही micro teaching करना है. So specific and single skills का बारे में आपको scale down करता है. फॉर पर्टिकुलर डे ओनली बोर्ड, आपको ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करते हैं, दैट स्किल ओनली दे मे टेक माइक्रो टीचिंग. और इंट्रोडक्टरी स्किल, आप कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सो दैट पर्टिकुलर स्किल ओनली दे कैन टेक माइक्रो टीचिंग. सो इट इज not for all skills at a time, it is a individual and specific skills will be taken for the micro teaching. Then questioning or leading a discussion, so different skills are there, like this practicing, mastering of teaching skills like lecturing, questioning, teaching specific curricula, so instructional material, classroom management. So individual skills will be taken and they will do the micro teaching. The short lesson is recorded on audio or video tape recorder and trainee gets to hear himself immediately after the lesson. The pupils who attend the lessons are asked to fill in rating the questionnaires evaluating specific aspect of the lesson. यूजुअली फॉर्म में क्या होता है, वो लोग माइक्रो टीचिंग देते हैं ना टीचर ट्रेनिंग, उसका ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं. आफ्टर दैट दे कैन सी दैट रिकॉर्डेड एंड दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ. एंड पीपल्स मतलब इनके साथ में बैठ रहने वाला स्टूडेंट्स रहते हैं ना, टीचर, अदर टीचर ट्रेनिंग, दे विल fill the questionnaires evaluating specific aspect of the lesson. That तो फीडबैक देने के लिए भी बोलता है. द ट्रेनीज ओन एनालिसिस ऑफ द लेसन बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक फीडबैक फ्रॉम द टेप
टुगेदर टू द पीपल। उनका रिकॉर्डिंग देख के वो खुद का फीडबैक भी ले सकते हैं। पीपल्स अदर कोलिग्स ऑफ हिज क्लास आल्सो बैठे रहते, सो बेस्ड ऑन देयर फीडबैक आल्सो ही मे इम्प्रूव द रिएक्शन। एंड सुपरवाइजर इज आल्सो एचओडी और उनका टीचर ट्रेनर रहता है एक, who that person is also giving the feedback. He may tell about improvisation and give the suggestion. Assist the trainee in the restructuring the lesson, which he them immediately reteaches to the new group of peoples. So अगर कुछ suggestion और feedback दिया, so the teacher trainee should improve the that problems and improve that lacunas, and he may immediately reteaches to the another group of peoples. The same peoples को नहीं teach करते, दूसरा लोगों को बिठा के teach करते हैं. That is the micro teaching planning. So micro lesson plan, teach the micro lesson for pupils or small group, then discuss feedback लेता है. अगर डिस्कशन और फीडबैक में क्या क्या सजेशन आते हैं, सजेशंस को अडॉप्ट करके once again the replan and reteach the another group. The same group will not come both time, because these people first time listen and they will discuss and give the feedback, then the teacher trainee replan and once again he reteach the another group of the pupils or another group of students. That is the micro lesson plan. Further, the assessment by the learner and the supervisor lead to the further improvements when the trainee teaches again, either immediately after the several days later. Once again, after this also the reteaching also, the further assessment by the learner and supervisor lead to the further improvement. So once again the feedback will be taken, then the feedback from these learners and supervisors will give the improvements in the trainee teaches again, either immediately भी दे सकते feedback or several days after भी feedback ले सकते. Already once feedback is taken and he replanned and reteached, then also the feedback and suggestion can be come here also. It may be immediate or some days later. That is the meaning of this sentence. This micro teaching sequence is practiced usually in a micro teaching laboratory in a teacher training institution or an in-service training program in a regular school. This is a foreign concept. In their colleges, they have this special laboratory or infrastructure for this micro teaching sessions. But in our India, we will conduct this micro teaching in the department or whatever facility available in the our institution. That is the difference. We don't have any specific separate laboratory in India. The main proposition of micro teaching, Allen and Ryan in their book on their subject give the following main proposition of the main teaching. Micro teaching. Micro teaching ये Allen and Ryan ने propose किया है. In their book they have given the following main proposition. क्या है actually micro teaching according to their view? Micro teaching is a real teaching, although a teaching situation is constructed in which the student, teacher and pupils work together in practice situation. Bona fide teaching does takes place. इसका मतलब क्या है? आपने माइक्रो टीचिंग कर रहे आपका पीपल्स के साथ, आपका सुपरवाइजर के साथ, इट इज आप सीख रहे हैं, फिर भी ये टीचिंग जैसे है. आपका बिहेवियर कैसे होना है, आप रियली टीच कैसे करते हैं वैसे ही होना चाहिए. माइक्रो टीचिंग इज ए रियल टीचिंग. अपने क्लासरूम में गए तो कैसे टीच करते हैं वही माइंडसेट से आपने माइक्रो टीचिंग में टीच करना है. दैट इज द meaning of this sentence. Micro teaching is a real teaching, although teaching situation is a constructed in which the student, teacher and pupils work together in a practice situation. ये practice करने के लिए है तो भी as a real teaching के जैसे होना चाहिए. That is the concept. Bona fide teaching does takes place, but bona fide teaching does मतलब क्या है, रियल टीचिंग कैसे होते हैं वैसे ही होना चाहिए बोल के इनका ओपिनियन है. बट इन रियल प्रैक्टिस it will not likely happen, because teaching in the actual class is different, and micro teaching is also different, but their expectation is there. So micro teaching also should like as a real teaching, bona fide as a teaching. But real scenario में ऐसा हो नहीं सकते, because we are aware of हमारे सामने बैठा वाला हमारा कोलिग्स है, हमारा सुपरवाइजर है. सो आई एम टीचिंग, सो कॉन्शियस आ जाते हैं. सो रियल टीचिंग के जैसे नॉट एग्जैक्टली रियल टीचिंग के जैसे नहीं होता है, बट एक्चुअली इनका ओपिनियन से क्या है,
it should go like a real teaching. So उनका ओपिनियन है. So practice real में हो नहीं सकते वैसे. Then micro teaching lessons that complexities of normal classroom teaching, class size, scope of the content, times are reduced. Is same meaning. Classroom का size, time and scope of the content. Content so थोड़ा ही content देता है. So that is the all these are reduced. That is the scaling down. Then micro teaching focus on training for the accomplishment of specific task. Specific task. You have to remember, micro teaching में at a time all the task नहीं देते हैं. Particular skills or particular task देता है. वो for that task only he will teach the micro teaching. Then this task may be practice on instructional skills, the practice of techniques of teaching, mastery of certain curricular materials or demonstration of teaching. अगर demonstration का बारे में ही आपको micro teaching करना है, so you have to focus on demonstration only for that micro teaching session. Micro teaching allows for increased control of practice. प्रैक्टिस होता है हमको बार बार माइक्रो टीचिंग करने से. कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस इन ए माइक्रो टीचिंग सेटिंग, द टाइम, नंबर, पीपल्स, मेथड्स, फीडबैक, सुपरविजन एक्सेट्रा में भी मैनिपुलेट. हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी रिक्वायर्ड. मतलब सुपरविजन को विजन को चेंज कर सकते हैं बार बार, एंड नंबर ऑफ पीपल्स भी चेंज कर सकते हो. फीडबैक के हिसाब से भी हमने मैनिपुलेट कर सकते हैं. माइक्रो टीचिंग अलाउज. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली. The micro teaching greatly expand the normal knowledge of results, feedback dimension in teaching immediately after the teaching. So the same things once again in the different sentence. The trainee is engaged in a critique of his performance. All this feedback can immediately translate into practice when the trainee reteaches shortly after the. Once the trainee get feedback, he immediately plan and reteaches the same thing in the adopting the suggestion. That is the meaning. So what is the useful of this micro teaching? The two related areas can be pointed out where there are clear advantage. Micro teaching का advantage कौन सा area में है? One is for training in the teaching skill. टीचर ट्रेनिंग को हमने टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए, सिखाने के लिए ये माइक्रो टीचिंग यूज कर सकते हैं. बट नाउअडेज रिसर्च इन टीचर ट्रेनिंग, अगर न्यू मेथडोलॉजी, न्यू मेथड्स इन टीचिंग में आ रहे हैं, टीचिंग स्किल में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, नया नया मेथड्स आ रहे हैं विथ यूजिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, देन दैट टाइप ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी को, टीचिंग स्किल्स को हमने टीचर को सिखाना है, देन आल्सो द माइक्रो टीचिंग इज हेल्पफुल. रिसर्च इन टीचर ट्रेनिंग में भी हेल्प होता है माइक्रो टीचिंग. द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग को हमने करता है, बट नाउअडेज इट इज आल्सो यूज्ड इन द रिसर्च इन द टीचर ट्रेनिंग. टीचर को ट्रेनिंग में कुछ रिसर्च ओरिएंटेड चेंजेस ऑफ मेथोडोलॉजीज, बिकॉज एजुकेशन इज changing education 3.0, 4.0, 5.0 drastically. The number of advancements are changing in the education or teaching methodology. So अगर हमने teaching training के लिए research करना है तो भी this micro teaching is helpful. So these are the two areas. One is to train the trainee teachers, another in the research in the teacher training. कोई नया method discover किया, so for to वो मेथड को समझने के लिए वो लोग ऑलरेडी टीचिंग करते हो, वो टीचर्स को भी ये माइक्रो टीचिंग के हिसाब से वो नया मेथड को वो एवेल्युएट कर सकते हैं, वेदर दिस न्यू स्ट्रेटजी और न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल. देन आल्सो द माइक्रो टीचिंग लाइक concept they may use. So these areas are related to this micro teaching. One third training in the teaching skills, another in the research in the teachers training. Then this is also happens in the phases, activities and components of the micro teaching. Micro teaching is also happens in the phases, as like teaching, pre-teaching, interactive and post-teaching, 3 phases tha. So like that here also the micro teaching also happens in the 3 phases. So micro teaching procedure has 3 phases. First one is knowledge acquisition phase, second one is skill acquisition phase, third one is transfer phase. So first क्या है? knowledge acquisition phase. इसका मतलब क्या है? In this phase the student teacher attempts to acquire knowledge about the skill, its rationale, its role in classroom and its components and behaviors. For this
He reads relevant literature. He also observes the demonstration lesson, mode of presentation of the skill. The student teacher gets theoretical as well as practical knowledge of the skill. For example, आपने कोई एक स्किल के ऊपर एक माइक्रो टीच करना है, सो एक्चुअली गोइंग टू दी दैट माइक्रो टीचिंग, मुझे ब्लैक बोर्ड यूज करना दिखाना है दिस माइक्रो. टुडे वी विल फोकस ऑन दी ब्लैक बोर्ड यूसेज स्किल, इसका बारे में हमको माइक्रो टीचिंग करना है. देन द ट्रेनिंग व्हाट ही विल डू, ही विल टेक द knowledge acquisition phase. What is the blackboard, why blackboard is using, what are the efficient types of using the blackboard में कैसे लिखना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखना है, कैसे एरेज करना है, ये सारे थिंग का बारे में नॉलेज लेने के लिए ट्राई करते हैं पहले टीचर ट्रेनिंग. सो इसका रैशनल क्या है, वो सारे चीजें आपने रिलेवेंट लिटरेचर को सर्च करता है. और कोई टीचर ऑलरेडी क्लासरूम में करते ना ब्लैक बोर्ड यूसेज कैसे करते हैं, वो हमने डेमोन्स्ट्रेशन जैसे देखता है. सो दिस फेज इज knowledge acquisition phase. For particular skill or task, we take some knowledge before doing the actual micro teaching. We will collect the knowledge regarding that skill or task from relevant literature, or certain we will observe this already existing teachers, how they will erase, how they will use the blackboard. So that type of knowledge we will acquire in the first phase, that is the knowledge acquisition phase. Then skill acquisition phase. On the basis of the model presented to the student teacher, he prepares micro lesson and practices the skill and carried out the micro teaching cycle. There are two components of this phase. पहले क्या है, नॉलेज फेज, नॉलेज लेते हैं उसका बारे में. उसका बाद क्या करते हैं, स्किल. हमने घर में क्या करते हैं, और हमारे खुद का खुद ब्लैक बोर्ड में लिख के एक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं हमने. सो before going the micro teaching in the actual session, we will practice on the blackboard. हमने खुद का खुद प्रैक्टिस करते हैं. So or the practice of that particular skill before presenting in the micro teaching session, that is the skill acquisition phase. We will not directly go in the session and we will not explore that skill. Before going to the session, we will take the knowledge, then we will take the some skill acquisition on the basis of मॉडल प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट टीचर. कौन सा मॉडल, कौन सा टास्क दिया है, उसके बेसिस में हमने ही प्रिपेयर्स द माइक्रो लेसन एंड प्रैक्टिस करते हैं ना हमने बिफोर गोइंग टू दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ द स्किल एंड carries out the micro teaching cycle. There are two components of this phase, एक feedback है, एक micro teaching setting. So micro teaching setting includes the condition like size of micro class, duration of the micro lesson, supervisor type. So ये कहते हैं एक्चुअली माइक्रो टीचिंग सेशन जाने से पहले हम खुद का खुद हमारा बैचमेट्स, क्लासमेट्स के सामने और हमारा पहचान वाले के सामने हमने बोलते हैं ना. फॉर एग्जांपल भाषण करने से पहले, एक्चुअल स्टेज में जाके भाषण करने से पहले हमने हमारा पेरेंट्स के सामने और हमारा फ्रेंड के सामने एक बार भाषण करके दिखाते हैं हमने कैसे है वो. दैट इज द स्किल एक्विजिशन फेज. एग्जाम्पल आपको समझना है, दैट इज द स्किल एक्विजिशन फेज. बिफोर गोइंग टू दैट वी विल प्रैक्टिस दैट स्किल, दैट इज द स्किल एक्विजिशन फेज. उस पे हमको वो फीडबैक भी मिलता है और एक माइक्रो टीचिंग हमको स्टेज में जाके भाषण करने का जैसे भी लगता है और हमको फीडबैक भी मिलता है. एक्चुअली वी आर प्रेजेंटिंग दैट भाषण इन पेरेंट्स के सामने, कुछ फ्रेंड्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. फीडबैक भी मिलते हैं, एक सेटअप भी मिल रहा है हमको. हाँ, किसी के सामने प्रेजेंट के प्रैक्टिस करते हैं हम. दैट इज द स्किल एक्विजिशन फेज. द थर्ड वन इज transfer phase. After the doing the knowledge acquisition and skill acquisition, we will transfer these all the. Here the student teacher integrates the different skills, and in place of artificial situation, he teaches in the real classroom and tries to integrate the all skills. Here क्या होता है, हमने knowledge भी लिया, practice भी किया, then we will transfer these skills and knowledge in the that classroom, micro teaching classroom में स्किल को प्रेजेंट किया गया. इन रियल सिनेरियो में माइक्रो टीचिंग का सब सुपरवाइजर है, आपका पीयर्स है. सो देन यू विल ट्रांसफर द skills to the actual teaching situation. That is the transfer phase. Here the student teacher integrates the different skills. In place of artificial situation, he teaches in the real classroom and tries
tries to integrate the all skills. So क्या होता है knowledge acquisition phase में, प्रीएक्टिव में ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, एनालाइज द डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल लेते हैं. इसके बाद एवल्यूएशन होते हैं ट्रांसफर फेज. ट्रांसफर फेज में क्या होते हैं बोथ बेस्ड ऑन दीज टू वी विल ट्रांसफर इन द रियल टीचिंग सिचुएशन. ऑल द स्किल को मर्ज करते. सो नाउ द टीचर ट्रेनी इज एबल टू टीच इन द रियल क्लासरूम. रियल क्लासरूम में टीच करने के लिए आफ्टर completing the your MD or after completing the B.Ed, he may able to the transfer the that skills in the real teaching situation. That is the third phase. Initial 2 phase में क्या होता है, टीचर ट्रेनी नॉलेज एंड स्किल को प्रैक्टिस करता है, माइक्रो टीचिंग लेसन में प्रैक्टिस करता है, बार बार एवोल्यूशन होता है. देन थर्ड फेज में क्या होता है, he can able to transfer his skills or he can actually do in the teaching situation. 3 phases में होता है माइक्रो टीचिंग. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ डूइंग माइक्रो टीचिंग? टू practice the teacher trainee to get remove of the fear and complex teaching को simple करने के लिए माइक्रो टीचिंग है. So ultimate aim of this micro teaching is the trainer teacher or that trainee is able to teach in the real classroom. That is the aim of the micro teaching. So this micro teaching happens in the 3 phases. First one is knowledge acquisition, skill acquisition, then transfer phase, post active phase. Post active phase में he is able to transfer his skills in the real classroom. Because for example हमने ड्राइविंग ग्राउंड में सीखते हैं, बाद में once we acquire skill acquisition होता है, ड्राइविंग करने से पहले हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, स्टीयरिंग क्या है, गियर चेंज कैसे करना है, क्लच क्या है, वो हमें प्रैक्टिस करते. स्किल एक्वाइजेशन फेज ये किधर करते हैं, हमने ग्राउंड में करते हैं. आफ्टर दिस 2 फेज वी विल राइड द कार ऑन द रियल रोड. वी आर एबल टू राइड द कार इन द रोड में जा सकते हैं. तब तक हमने ग्राउंड में ही करते हैं. एक स्किल एक्वाइजेशन फेज तक क्या है, हमने ड्राइविंग कोच रहते हैं हमारे पास एंड वी विल ड्राइव इन द ग्राउंड ओनली. आफ्टर दिस फेज वी आर एबल टू ड्राइव कार इन द real roads or real scenarios also. So same like that the micro teaching phases are there: knowledge acquisition, skill acquisition phase, and transfer phase. These are the 3 phases in the micro teaching. इस पे स्टेप्स है, स्टेप्स को ही 3 फेज बोल के हमने डिवाइड किया है. यू कैन गो थ्रू सिंपली दिस स्टेप्स. these are no new things are there. Whatever we discussed, the same steps are written here. They are divided into 3 phases. Already we discussed about 3 phases. If you simply go through these steps, you can understand your own self. So you can easily understand these sentences. No difficulties are there. So in Indian scenario, what happens? The Indian model of micro teaching. इंडियन मॉडल, ये माइक्रो टीचिंग का मॉडल फॉरेन में अलग अलग तरीके से बताया है. सो इंडिया में क्या है, एनसीईआरटी गिव्स द फॉलोइंग सेटिंग्स. एनसीईआरटी ने ये क्राइटेरिया दिया है माइक्रो टीचिंग के लिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर्स 5 to 10 होना चाहिए. पीपल्स बोलते हैं ना उनको, वो द टाइप ऑफ पीपल्स प्रिफरेबली उनका बैचमेट्स और क्लासमेट. अगर 10 लोग पीजी स्टूडेंट्स है, अगर एक का माइक्रो टीचिंग क्लास है, सो उनका बैचमेट्स और उनका को स्टूडेंट्स इज द पीपल्स, वही पीयर्स होना चाहिए. बिकॉज दे ओनली जज. अगर आप शैल्य तंत्र में 5 लोग पीजी स्टूडेंट्स है, अगर आपका एक का कोई आज माइक्रो टीचिंग चल रहे, सो बाकी 4 आपका कोलिग्स रहते हैं ना, दे आर पीपल्स इन दैट सेशन. एंड योर एचओडी एंड प्रिंसिपल में भी सुपरवाइजर आर some senior most person in that teaching. That is the concept. The type of supervisor, teacher educators and peers. टीचर एजुकेटर मतलब आपका एचओडी और टीचर का ट्रेनिंग देने वाला, वो पर्सन भी सुपरवाइज कर सकते हैं. एंड पीयर्स आल्सो, द पीयर्स आल्सो एक्ट एज ए आपका सुपरवाइजर. देन ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो लेसन यूजुअली 6 मिनट है. एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग टू क्या है, 6 मिनट देता है वो टाइमिंग. This is what they have mentioned, but in practice we can do in flexible manner, but the standard recommendation is like this. The duration of micro lesson is 6 minutes. 6 minute में आपको माइक्रो टीचिंग करना है.
द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट्स। 10 एक माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट होता है। इसका बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स है। सो एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो टीचिंग का एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग का मेरिट्स क्या है? सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स ऑन माइक्रो टीचिंग सिस्टम। सो परफॉर्मेंस को सुपीरियर कर सकते हैं। देन ट्रेनिंग इन रियल टीचिंग, इट इज लाइक ए रियल टीचिंग के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंक्रीज कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस टीचिंग स्किल्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा आता है। इनिशियली यू कैन आपको डर लगा हुआ रहते, ब्लैक बोर्ड सफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते हो और डिफरेंट स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेशन को यूज नहीं कर सकते, आप स्टेज फियर रहते। सो द इंक्रीज कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस इंप्रूव होता है। दैट इज द मेरिट्स ऑफ द माइक्रो टीचिंग। करते करते आपका पीपल का आपका कोलिग्स का सामने और आपका टीचर का सामने आपको बार बार ये टीचिंग करने की वजह से आपका कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस इंक्रीज होता है। देन अकॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल को आपको बढ़ा सकते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक, आपका तुरंत क्लास के बाद आपको फीडबैक मिलते हैं ना, आपका कोलिग्स आपको फीडबैक देते हैं, सुपरवाइजर भी कुछ करेक्शन है तो सजेशन देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। देन हेल्पफुल इन द सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्वड इन द स्टूडेंट्स टीचिंग, आपको कुछ प्रॉब्लम रहते हैं रिलेटेड टू टीचिंग, स्टेज फियर हो और आपका प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व होता है रिलेटेड टू योर टीचिंग प्रॉब्लम। किसी किसी को स्टूडेंट एक ही तरह ऑडियंस के तरह ही देखते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड भी देखना है, ऑडियंस के तरह भी देखना है, ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं टीचिंग का स्किल्स के ऊपर। दो दैट प्रॉब्लम्स इट माइक्रो टीचिंग हेल्प्स टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। Helpful in the transfer of general teaching competency to the classroom teaching, and helpful in the building of confidence. So these points you can yourself you can understand. Availability of feedback from different sources. So micro teaching में feedback किधर किधर से मिलते हैं आपको? सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर और एचओडी कौन बैठे रहते हैं उनसे फीडबैक मिलता है। पीयर ग्रुप आपका कोलिग से मिलता है। अनदर, इफ यू रिकॉर्ड योर माइक्रो टीचिंग, अगर आपका टीचिंग को आप रिकॉर्ड किया, सो you can see the recording later on, then you can take the feedback your own self. That is also one of the mode of getting the feedback. Micro lesson, preparing on the way of macro lesson. Micro lesson is a preparing the way of macro lesson. So now new concept comes here, that macro lesson. What is the macro lesson? We will see in the next slide. Teaching under the simulated condition. ये conditions रहते माइक्रो टीचिंग में। सो इन दैट सिमुलेटेड मतलब रियल क्लासरूम में कैसे कर सकते, वैसे ये कंडीशन लाया हुआ है हमने माइक्रो टीचिंग में। दैट इज द सिमुलेशन कंडीशंस। Provision of many opportunity to teacher trainees to observe the derived patterns of behavior, lessening the complexities of normal classroom teaching by the scaling down techniques. Scaling down technique करने के वजह से टीचिंग रियल टीचिंग करने में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम स्केलिंग डाउन करके हम प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेरिट। एंड फैसिलिटेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टीचिंग डिवाइसेस मेथड को हमने कॉम्बिनेशन करके भी माइक्रो टीचिंग को कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस क्या है? माइक्रो टीचिंग इज स्किल ओरिएंटेड एट द कॉस्ट ऑफ कंटेंट ओरिएंटेशन। लिमिटेशन क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग में? अगर आपको स्पेशली आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लेवल का कॉन्सेप्ट कंटेंट आपने बोल रहे हैं माइक्रो टीचिंग में, उसके ऊपर कोई नहीं ध्यान देता है। सिर्फ माइक्रो टीचिंग में आपका स्किल, आपका बिहेवियर, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन कैसे करते क्लास में, वही दिखता है। अगर फॉर एग्जांपल दोष का बारे में आपको कंटेंट दिया है और दोष का कॉन्सेप्ट में आप क्या बताया उसके बारे में कोई नहीं ध्यान देता है। सिर्फ आप दोष का आप स्टूडेंट को कैसे समझा रहे हैं, कैसे स्किल आप यूज कर रहे हैं, that is the only focus. That is the limitation of micro teaching. Micro teaching is a skill oriented skill oriented है, not a content orientation. आपको कंटेंट का कोई नहीं देखते है, कितना डीपर ले रहे, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे, वो नहीं देखते। ओनली इट इज ए स्किल ओरिएंटेड ब्रॉड बेस्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर नॉट पेड देयर ड्यू टू अटेंशन। इस पे क्या होता है? पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, डिफरेंट बिहेवियर्स आपका क्या रहते हैं टीचिंग करने में, उसको अटेंशन नहीं देते वो लोग। Only they paid attention for the specific teaching skills. आपका स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स क्या रहते हैं उसके ऊपर ही बिहेवियर रहते हैं। आप अगर हर एक एटीट्यूड बिहेवियर अलग अलग रहते हैं, सारे बिहेवियर को कोई
एड्रेस नहीं करते माइक्रो टीचर में. दे फोकस ऑन द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक स्किल्स व्हाट एवर नीडेड फॉर द टीचिंग. They will paid attention for that only. Then scope of developing micro teaching skill is limited. Skills is limited. Micro teaching से आपका skill बढ़ाने का limitation है because the skills are very less. टीचिंग करने के लिए कितना स्किल्स चाहिए? अगर 6 to 8 स्किल्स है, उतना स्किल्स में ही आप बार बार माइक्रो टीचिंग का प्रयोग कर सकते हैं. उसके बाद आप कर नहीं सकते. दैट इज दिस द स्कोप ऑफ डेवलपिंग माइक्रो टीचिंग स्किल्स इज लिमिटेड. ज्यादा स्किल्स ब्लैक बोर्ड, इंट्रोडक्शन, प्रोबिंग, हमने इनिशियल फर्स्ट स्लाइड में देखा ना. So these are the skills. So after these skills, so there are no scope for micro teaching. इतना skills को आपने practice कर सकते हैं based on the micro teaching. That is the concept. After these skills, there are more no further skills we have to develop. That is the limitation of this micro teaching. The scope of developing micro teaching skills is limited. Skills are limited. Skills को आप micro teaching कर सकते हैं. The micro teaching does not take into consideration the overall environment of the teaching. Once again, ये हमने एक simulated condition में कर रहे हैं, overall environment को नहीं देख रहे हैं. That is the limitation of the micro teaching. So Indian model क्या है micro teaching के लिए? It is developed by NCERT. You can read yourself also. In foreign में क्या रहता है? The mode of presenting skill is written material, lectures, demonstration and discussion. हमारा इंडिया में क्या है? written material, lecture, demonstration, discussion कर सकते हैं. Not through film, video, CCTV as in the case of advanced technology in the USA and UK में क्या रहते हैं? micro teaching को by using films, video, CCTV ये advanced technology भी use करते हैं. हमारे पास नहीं use करते हैं. material and lecture, demonstration इसमें limit हो सकते हैं. Then live observers are present in the अगर आपका क्लास का लाइव ऑब्जर्वर भी रहता है, बट इन इंडियन सिनेरियो दैट इज नॉट ओनली सुपरवाइजर एंड क्लास में कितना लोग ऑफलाइन बैठते हैं उन लोगों ही फीडबैक देते हैं. ऑनलाइन सीसीटीवी यूज करके, आपका वीडियो यूज करके कोई भी लाइव ऑब्जर्वर नहीं रहते. द माइक्रो टीचिंग लैबोरेटरी कैन बी फंक्शन. वंस अगेन दिस लैबोरेटरी एवरीथिंग विल नॉट कंसर्न विद द इंडियन सिनेरियो. दिस आर the concept of the other US and UK. There the micro teaching laboratory रहते हैं, उसके facility चाहिए, वो सारे चीजें उस पे आता है. So but NCERT ने इतना दिए done through the written material, lecture, demonstration को ही हमको limited है. Then but हमारा NCERT ने क्या बोलते हैं? मिनिमम फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस. लैबोरेटरी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मिनिमम फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्पेस, मटेरियल एंड इक्विपमेंट यूज करके माइक्रो टीचिंग कंडक्ट करना है. इवन फीडबैक सेशंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन इवन इन कॉरिडोर्स एंड ओपन स्पेस. हमारे पास लैबोरेटरीज अवेलेबल नहीं है. देन द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग. ड्यूरेशन क्या है? टीच 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, रीप्लान 12 मिनट्स, रीटेक 6 मिनट्स, रीफीड बैक 6 मिनट्स, टोटल 36 मिनट. पहले आप 6 मिनट का माइक्रो टीचिंग करता है, बाद में 6 मिनट में आपका फीडबैक का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए. फिर 12 मिनट्स इज गिवन फॉर योर रीप्लान. बेस्ड ऑन दिस फीडबैक एंड suggestion, you have to replan that concept, and once again you reteach in the 6 minute. Once again the final feedback will be given in the 6 minute. The total duration is 36 minutes. So one cycle of micro teaching consists of 36 minutes. So actually only 6 minutes is given for the micro teaching, 6 minutes for feedback. Based on this feedback, for replanning 12 minutes is given. Once again that suggestion of feedback, you will go to the 6 minutes for reteaching. After reteaching also the once again re-feedback के लिए 6 minutes दे सकते हैं. So 36 minutes is the one micro teaching cycle. So this is micro teaching lesson 6 minutes. Discussion feedback के लिए 6 minute, replan के लिए 12 minutes. Once again reteach the another group
for 6 minutes and re-feedback के लिए 6 minutes. So this is the one micro lesson planner, micro teaching plan में 36 minutes का होता है. 6 minutes, 6 minutes, 12 minutes, 6 minutes, another feedback here, that is 6 minutes. Totally collect 36 minutes. All of you understood this? Hello? Yes, sir. Then what is difference between micro teaching and traditional teaching? Here traditional teaching means actual teaching going in the classroom is traditional teaching. What is micro teaching is we are doing this for trainee teachers. So what is the difference between these two? Now we are seeing the micro teaching में क्या रहता है, duration of time for teaching is 5 to 10 minutes रहता है, but actual duration class में real में क्या रहता है 40 to 50 minutes of time duration रहता है. There is a immediate feedback, immediately feedback मिलता है उनको peer से and supervisor से, but immediate feedback is not available. बाद में आपको students आके बोल सकते हैं feedback is not that much immediate compared to this micro teaching. Then teaching is carried out under the control situation में रहते हैं, control condition में रहते हैं. आपको थोड़ा ही students दिया रहते हैं, peers रहते हैं, usually students are your peers. So this is in the control situation, but it is a natural situation. classroom में आपका control नहीं रहते हैं बच्चे को ऊपर, so natural situation रहते हैं. Here you are controlled time, number of students, everything you are doing in the like experiment control situation. Here no control over the situation. Teaching is relatively simple, teaching becomes complex because teaching here relatively simple because that is for demonstration purpose or your learning purpose, but here teaching becomes complex because it is real teaching happens here. Traditional teaching, the role of supervisor is specific and well defined to improve your teaching. इधर सुपरवाइजर आपका रोल क्या है, आपका स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड इंप्रूवमेंट के लिए रोल है सुपरवाइजर का. इधर सुपरवाइजर इज वेग, इधर सुपरवाइजर का रोल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज वेग. Then pattern of classroom interaction can be studied objectively. Pattern of classroom interaction cannot be studied objectively. इसका मीनिंग क्या है, आपका एक ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ऑलरेडी, ये पर्टिकुलर स्किल और टास्क के ऊपर you can interaction in the at micro teaching classroom. That is the patterns of classroom interaction can be studied objectively, but here that type of objectives are not there in the traditional teaching. These are the difference between micro teaching and traditional teaching. Then we saw the one word macro teaching. What is the macro teaching? Can anyone tell macro teaching? माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचर ट्रेनर्स के लिए, स्टूडेंट टीचर के लिए हमने यूज करते हैं. व्हाट इज द मैक्रो टीचिंग? वंस यू कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोसेस, you complete the MD, after for joining the any college, if that college principal tells you that you take the demo class, one demo class लेना है आपको, that is the micro teaching. उधर क्या रहते हैं, एक क्लास को लेके जाते हैं आपको, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर, आपका पदार्थ विज्ञान संहिता बेस्ड है तो एक पर्टिकुलर टॉपिक देते हैं वो लोग, आपको 5 मिनट्स और 10 मिनट्स में एक क्लासरूम में आपको डेमो देना है. सो डेमो में क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, आपका रिलेटेड सब्जेक्ट का भी रहते हैं, प्रिंसिपल में. दैट इज द मैक्रो टीचिंग. मैक्रो मीन्स रियल टीचिंग सिनेरियो में करते हैं लेकिन टाइम कम रहते हैं उसको. मैक्रो फॉर सिलेक्शन पर्पस के लिए करते हैं हम मैक्रो टीचिंग में. एक्चुअली दिस टाइप हमने मेरा सेकेंड पीयूसी में एसडीएम कॉलेज में था. देन जूलॉजी का एक लेक्चर को अपॉइंट करना था वो लोगों को. वो लोगों ने क्या किया, वो नया लेक्चर को हमारा क्लास में भेज दिया. दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर टॉपिक और हमारे पीछे हमारा बायोलॉजी का एचओडी एंड प्रिंसिपल बैठा. देन टीचर को नया, हमको भी पता नहीं था ये कौन है, नया टीचर है. सो वो बता, इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे नया टीचर आ गए, उनको एक टॉपिक दिया है. सो थोड़े टाइम, एक्चुअली इसमें 5 मिनट्स बोलता है लेकिन प्रैक्टिकली इट में गिव 10-15 मिनट्स फ्लेक्सिबिलिटी टाइम रहता है. एक्चुअली इट इज ए मैक्रो टीचिंग में. सो दैट टीचर विल प्रेजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आफ्टर फिनिशिंग हिज टीचिंग, उनको वापस भेजते. बाद में स्टूडेंट्स का भी फीडबैक लेते हैं, कैसे लगा आप लोगों को, कैसे लगता है टीचर, वो बोलते हैं. बाद में वो खुद का टीचर्स और प्रिंसिपल आल्सो दे विल डिसाइड
whether he is fit for this. So डेमो देके उनका ट्रेनिंग और उनका नॉलेज, उनका स्किल्स को वो लोग मेजर करके उनके लिए whether we have to give job or not, they will decide. That is the macro teaching. All of you understood what is the macro teaching? Simply you understand like this. Macro teaching, we mean the teaching in a regular classes. Macro teaching में regular classes में ही teaching होता है, regular चलने वाला class में ही होता है, but 5 to 10 minutes less time देता है. Macro teaching में सब skill दिखाना पड़ता है टीचर को, मेरे पास क्या क्या स्किल है सब कुछ दिखाना पड़ता है एंड मैनेज करना पड़ता है इन दी लेस टाइम, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है. बट माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, ओनली वन स्किल और वन टास्क के ऊपर ध्यान रहता है माइक्रो टीचिंग में फॉर ट्रेनिंग पर्पस. हियर मैक्रो टीचिंग में ही इज टीचिंग रियल क्लासरूम में आके डेमो देना पड़ता है. वेदर में देयर में बी स्टूडेंट ऑफ 40 or 100, बट टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट्स लिखा है इधर. सो यूजुअली 5 मिनट्स नहीं दे सकते, at least 30 minutes or one class, practically it depends. So 5 minutes में उनका evaluation, so अलग अलग एजुकेशन सिस्टम में करता होगा, I don't know, बट यूजुअली हमारे पास क्या है, 30 मिनट्स तो देते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक देते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं. दैट इज द मैक्रो टीचिंग. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज मैक्रो टीचिंग? दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड, यू कैन सिंपली रिमेंबर डेमोन्स्ट्रेटेड. डेमो क्लासेस बोलते हैं ना फॉर न्यू टीचर्स के लिए. दैट इज द कांसेप्ट. So quickly we will solve 3-4 questions, so that completes this session. So question number 1, all of you understood up to this what is micro teaching and macro teaching? Yes, sir. Okay. So micro teaching is most effective for the student teacher. Option A, during the practice teaching, after the practice teaching, before the practice teaching, none of the above. Micro teaching most effective for the student teacher. माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट टीचर के लिए कब इफेक्टिव रहते हैं? ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? हेलो, ऑल ऑफ यू? हेलो, Before the practice teaching. एनी अदर पर्सन्स आल्सो? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? माइक्रो टीचिंग ये कब इफेक्टिव रहता है? ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग के लिए, दैट टाइम में माइक्रो टीचिंग इफेक्टिव है. और आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग, ऑलरेडी मेरा टीचिंग खत्म हो गया, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा रिटायरमेंट हो गया, आफ्टर दैट माइक्रो टीचिंग यू इफेक्टिव है. और बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, एक्चुअली टीचिंग प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस मतलब यार प्रैक्टिस बोलते हैं ना, हमने इंटर्नशिप होने के बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं. सो प्रैक्टिस करने से पहले इंटर्नशिप में ट्रेनिंग का जरूर है. वंस इफ यू आर स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, देन इंटर्नशिप जैसे हम टीचिंग ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है. सो इंटर्नशिप विल बी बिफोर द प्रैक्टिस, स्टार्टिंग द प्रैक्टिस. दैट लाइक बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, दिस माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल, मोर इफेक्टिव इन द बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. So that's why it is called teacher training or student teacher training. Micro teaching is for that B.Ed student only. Before they really start the practice of teaching in the schools or colleges, they will undergo for this micro teaching. So if you want any further information, you may ask your any brothers, sisters, any persons who undergone this B.Ed. They people may explain you more better for these things, micro teaching, what are the trainings. So actually they will learn in detail. So they also undergone this micro teaching, what exactly what this NCERT tells. So but our micro teaching is different in medical field. हमारे में ये बोले जैसे नहीं रहते, हमारा अलग रहता है. हमारा पीजी में क्या रहता है, एक क्लास देते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए. दैट टाइम द आवर HODs और some other teachers may come and sit and they will assess our knowledge and skills. So वो लोग हमारा assess करता है. So that is also a micro teaching only. In final viva में क्या रहते हैं, एक सब्जेक्ट को पिक करके उसका बारे में एक माइक्रो टीच करने के लिए बोलते हैं 5 मिनट्स में हमको. So all the examiners, 4 examiners बैठते हैं क्लासरूम में.
सो हमने ब्लैक बोर्ड कैसे यूज किया, कैसे इंट्रोडक्शन दिए, वो सारी चीजें देखते हैं ना। प्रैक्टिकल में कितना लोगों को किया है माइक्रो टीचिंग फाइनल पीजी में, किया है कितने लोगों को? Yes, sir. ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में करते, कभी कभी मिस भी होगा, लेकिन यूजुअली दे विल डू दिस वाइवा प्रैक्टिकल एंड माइक्रो टीचिंग भी करता है एक हमारा बैच में 4 टॉपिक 5 टॉपिक को चिट बना के रखते हैं, उस पे कौन सा टॉपिक आते हैं उसके लिए हमको एक डेमो माइक्रो टीचिंग देना पड़ता है 5 मिनट्स में। सो दे विल सी वेदर वी विल यूज ब्लैक बोर्ड, how we will start introduction, so that thing they will assess in the at 5 minutes. That is the micro teaching in our field. Then who developed micro teaching method? आपको एक नाम सुना है ऑलरेडी ये क्लासेस में, who developed the micro teaching? अलन, अलन का नाम सुना ना? Ellen. So correct answer is option B, अलन, VW अलन. The purpose of the micro teaching is option A, to analyze the performance of trainee teacher and suggest feedback. Second one is teaching lessons in a micro parts for a better understanding. Micro manages manage students' behavior. Teaching by using microphone for the benefit of the deaf student. So what is the purpose of micro teaching? A. To analyze the performance of trainee teacher and suggest feedback. Yes, this is the purpose of micro teaching. These are all options. This is not the microphone use. This is wrong. Micro manage students behavior, this is also wrong. Micro parts में करते, this is also wrong. To analyze the performance of trainee teacher and suggest the feedback, this is the correct answer. So all of you understood what is the this models and micro teaching. So Yes, sir. if you understood the concept, you are able to solve the questions. अगर आपको कुछ फास्ट लगा, because content is more, the concept is same, so that's why I once I explained and I will move on fast, because अगर आप सिर्फ ये पीपीटी स्टडी किया तो भी आपको समझ में आते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बेस्ड ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार आपको समझ में आ गए तो you are in your own by reading material and other textbook also, you are now able to understand what is the micro teaching, what is the macro teaching, what are the steps, process, phases. अभी आपको खुद का कुछ स्टडी करने के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव द आइडियाज एंड कांसेप्ट ऑफ दिस. सो अभी पेडागोगी क्या है, एंड्रागोगी क्या है, नाउ यू आर गेट सम आइडिया अबाउट दिस थिंग्स. अगर इफ यू go to the detail in pedagogy also, then you can understand some concept. So that is the idea. So any doubt is there, so you can ask, or will we will close this session. Any doubt No, sir. or any suggestions? So it is not be one way. Any problem with my teaching or anything is there, so you can suggest me. I will try to improve. You can leave the session. My laptop is hanging, so I can't end this session. So Okay, sir. you can leave the session. So I have stuck with some net. So now you can leave the session. No problem. Thank you, sir.